In this topic, we are going to discuss about one of the variables that moderate the complexity of domestic and international human resource management, which is the cultural environment. आपको पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स पाए जाते हैं और उन कल्चर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. पाकिस्तानी कल्चर डिफरेंट है, अमेरिकन कल्चर डिफरेंट है और उन सब कल्चर्स के अंदर डिफरेंट नॉर्म्स और बिहेवियर्स पाए जाते हैं. सो द कल्चरल एनवायरनमेंट जितना डिफरेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस वाइड होगा. So in order to study this cultural difference, we first need to define what is culture. Culture is the term which is used to describe a shaping process over time. Shaping of what? Shaping of values, norms, and behaviors. It is a process which is relatively stable over time. आपका culture जो एक दफ़ा develop हो जाता है वो stable रहता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इसके अलावा वो कल्चर जो है इट रिफ्लेक्ट्स शेयर्ड नॉलेज. पीपल हैव शेयर्ड ओपिनियंस, शेयर्ड नॉलेज अबाउट इवेंट्स, अबाउट ऑब्जेक्ट्स, अबाउट सर्टेन हैपनिंग्स, अबाउट सर्टेन rituals. So they have a shared knowledge of what has happened in their particular context. And it attenuates variability in values, behavioral norms, and patterns of behavior. So it reduces the variability. So एक culture से जो लोग belong करते हैं, उनका behavior, उनके norms, उनकी values, वो सब एक तरह के आपको नजर आते हैं. So that is what a culture is. When a person moves from one culture to the other, what happens is that the person is faced with a phenomena which is called cultural shock. जब आप एक कल्चर से किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं, अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो जब आपको एक कल्चर की नई चीज़ें, उनकी डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं तो वो आपको बहुत प्लेजेंट लगता है. आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, आप उनके बारे में कमेंट करते हैं, फिर कुछ लोग वापस आके उसके बारे में अफसाने भी लिखते हैं. लेकिन जब आपको एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाके एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, that creates a problem and you have to adjust to that situation very quickly. So that creates a cultural shock. That cultural shock needs to be dealt with. Human resource managers, they need to do something to reduce that cultural shock. How they can do that? They can do that by creating an impression about what culture they are going to face, giving them orientation, then giving them counseling sessions, providing help throughout that process of adjustment. Because this cultural shock, it may lead to psychological disorientation and loss of identity. जब आप किसी नए कल्चर में जाके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे बिहेवियर्स और नॉर्म्स क्या हैं. ये तो एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है. So that will lead to a psychological stress and loss of identity which needs to be dealt with. So that is the cultural issue of the cultural environment. Problems exist when you are talking about cultural differences. आप cultural difference को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जब आप रिसर्च करते हैं कल्चर के बारे में तो आपको ये पता लगता है कि कल्चर की तो कोई एक सिंगल डेफिनेशन ही नहीं है, या आप इस वेरिएबल को किस तरह से आप इसको ऑपरेशनलाइज करें, आप किस चीज को कल्चर कहें. बिकॉज कल्चर इज सो थिक, इट इज सो डेंस, इट इज सो कॉम्प्लेक्स that you cannot put it in one definition. But what you need to do, usually what happens in studies is that it is treated as an omnibus variable. जो भी आपको difference नजर आए आप कहते हैं ये cultural difference है, but it is a problem with the cultural definition.
So whenever you are trying to pin something with a cultural difference, that should be done by defining culture before you go for that differentiation rather than post hoc. And then you need to realize that national differences are not always cultural differences. Sometimes in one nation, there may be several cultures existing. For example, in our own Pakistani context, there are different culture existing in different provinces, and they have different type of dynamics which need to be understood. So one national culture cannot be imposed on an entire country. So that needs to be dealt with. Another problem with exploring cultural differences is that whether you are going from an emic approach or you are going from an etic approach. Now, this is a new concept, emic and etic. Emic approach is by defining culture-specific aspects of concepts of behavior, and etic approach is culture common aspects. अगर आप ये कहें कि दुनिया में जितने कल्चर्स हैं उनमें क्या चीजें कॉमन हैं और आप उनको एक्सप्लोर करें, दैट इज एन एटिक अप्रोच. कि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स क्या पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या चाइना में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या इंडोनेशिया में भी एग्जिस्ट करते हैं और अमेरिका में भी एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज एटिक अप्रोच. यू आर टेकिंग वन कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लोरिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑन वेरियस डिफरेंट कल्चर्स. एंड एमिक अप्रोच इज कल्चर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स. आप किसी एक कल्चर का कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें, विच इज इन डेप्थ एनालिसिस of that particular culture which is not present in other cultures. That is emic approach. If you go from emic approach, you will find differences. If you go from etic approach, you will find similarities. So that is, both of these approaches are correct, but it depends on what type of exploration you want to make. Are you talking about similarity or are you talking about differences? The etic and emic approach, they lead to two types of hypothesis. One is the convergence hypothesis. Convergent hypothesis is that most of the cultures in the world will have similar dimensions. They will have similar qualities and characteristics. It is based on two assumptions. Number one is that there are principles of sound management that hold regardless of national environments. आप किसी भी national environment में चले जाएं, आप एक ही तरह के management principles use करके अपनी human resource को manage कर सकते हैं. और दूसरी assumption जो है वो ये है कि universality of sound management practices would lead to societies becoming more and more alike in the future. कि आप एक ही तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सब कल्चर्स के ऊपर अप्लाई कर दें. अगर आप सब कल्चर्स पे अप्लाई कर देंगे, वो यूनिवर्सल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बन जाएंगी और आपके कल्चर्स जो हैं वो एक तरह के दिखने लग जाएंगे. ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच आपकी वेस्टर्न लिटरेचर से, पर्टिकुलरली आपके अमेरिकन लिटरेचर से ओरिजिनेट करती है, जहां पे वो ये समझते हैं कि वो जो अमेरिकन कल्चर है या उनकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो सब कल्चर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म करवा सकते हैं. दिस इज द convergent hypothesis, that you can use universal management practices on all type of cultures and that will make them look alike. On the other hand is the divergence hypothesis, which assumes that there are cultural differences which cannot be dealt with a universal type of management practices. So you cannot impose the same kind of structure, you cannot impose the same kind of HR policies, you cannot impose the same kind of culture, organizational culture on people belonging to different countries. So it is seen that the convergent hypothesis that focuses on
macro level variables, on organizational structures, on HR policies, on compensation plans, etc. And divergence hypothesis that focuses on micro level behaviors, which are behaviors, norms, and values of people working in the organization. Research shows that both these hypotheses, they are correct and they are applicable, and it is seen that firms are becoming more alike. That is coming from the ethic approach. You see that multinationals are taking a similar kind of personality, a similar kind of shape, a similar kind of operations all over the world, but the emic approach is also applicable as individual behavior is maintaining cultural specificity. So if you see in various different countries, लोग अपने culture को retain करते हैं, लेकिन वो similar organizational practices को भी जो हैं वो adopt करते हैं. It is something which is a combination of the emic and ethic approach. You cannot apply only one approach to understand cultures. If you want to go international, if you are operating in an international context, you must have a cultural awareness. If the managers, people who are going from parent country to the host country, or people who are making policies about managing international human resources, if they will keep on thinking that the same culture is applicable everywhere, or the way we do things that is correct, or that may be applicable everywhere, that is not going to help an organization be successful. This is called cultural insensitivity. And cultural insensitivity can lead to international business failure, both in the individual and the firm level. In order to understand the culture of a particular place or a particular country, we have Hofstedes' framework of national culture. This is something which you would have definitely read in your management books. It is based on 4 dimensions. You evaluate the culture of a country or culture of a particular location on 4 dimensions. Number 1 is individualism, collectivism, how much a society is based on individualistic concepts. लोग अपने अपने काम खुद करते हैं, अपनी responsibility खुद लेते हैं, अपना income खुद generate करते हैं, और the society is based on a collective approach in which people operate in forms of groups. They depend on each other, they do things for each other, they have a collective sense of responsibility. So whether the culture is individualistic or collectivist. The second dimension is that of power distance, that between 2 ranks, 2 levels, how much power distance is there, how much do you give reverence to your bosses, how much subordinate your subordinates they feel like. ये आपको लोगों के बात करने के स्टाइल से पता लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर में जहाँ पे पावर डिस्टेंस कम है, लोग अपने बॉस को उसके नाम से बुलाते हैं. इन ईस्टर्न कल्चर्स, इन सब कॉन्टिनेंट कल्चर जहाँ पे पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग अपने बॉस को सर कहते हैं. सो even from words you can see that how much power distance is there, and that affects how people operate in organizations. Then the third aspect is masculinity and femininity, whether masculine variables, masculine concepts, they are more applicable in a culture, or feminine concepts. And then is uncertainty and avoidance, whether people of a particular culture, they want to avoid uncertainty, they don't want to take risk, or people are risk-taking in a particular culture.
On these dimensions, when you evaluate the national culture, you find differences, and that helps you understand the culture of a place and then effectively manage that particular environment.